welcome back. Here we start with module 2, or rather than starting, we'll continue with our module 2 of Indian Contract Act 1872 part 2. In my last session we saw concern, free concern, what is free concern, what is void agreements, voidable agreements, etc. Today we are going to cover quasi contracts, okay, and further what we are going to cover that I'll inform you later, okay. First of all, let us start with quasi contracts or implied contracts. We have already discussed when we were doing definition. I already told you what is quasi contracts. हमने कुछ याद आ रहा है क्या है quasi contracts? Okay, चलो let us start. It is a contract of certain relation resembling those created by contract. फॉर एग्जाम्पल ये मीनिंग समझने से पहले हम एक एक एग्जाम्पल मैं तुमको देती हूँ. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है, पेरेंट्स का एक बेबी बॉर्न होता है, ओके. सपोज दैट बेबी इज बॉर्न हैंडीकैप और इज बॉर्न लूनेटिक और सम फिजिकल डैमेज और मेंटल डैमेज इज डन टू द बेबी और इज बॉर्न विद दैट डैमेज, ओके. सो ऑब्वियस है गांव में लोगों के पास बहुत अच्छी सहूलियत होती है कि वो बच्चे को फेंक देते हैं या दे देते हैं या कुछ कर देते हैं, बट उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल जाती है क्या? वाई दे डू डैट? बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ द responsibilities, but actually if you see, it's the responsibility of the parents, okay, although they have not contracted with anybody, but yes, because it is their own child, it is their responsibility to take care of the kid, of the child, okay. So it is in law or imbibing by the law, okay, it is imbibing by the law or making somebody responsible, okay, in place of that person. कोई तो होना चाहिए, किसी को तो हमको अकाउंटेबल करना है, किसी को तो हमको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है. तो अगर ऐसा चाइल्ड है और ऐसे चाइल्ड से कुछ गलती हो जाता है तो ऑब्वियसली वो गलती लड़के की नहीं है. किसका ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखना है? देयर हैज़ टू बी सम पर्सन हु हैज़ टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स डन बाय दैट किड, okay. So these people are known as these kind of contracts are known as quasi contracts or implied contracts, where actually the person, okay, is made accountable although he is not involved into the contracts, okay. So now there are 5 different types of quasi contracts. First thing, okay, this is covered into from section 68 to 72. 68 वाला सेक्शन कौन सा है? क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन लूनेटिक है या हैंडीकैप है, इसका मतलब ये कि उसको नेसेसिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये हर किसी को, ये बेसिक नेसेसिटी हर किसी को लगती है. सो सम पर्सन हैज़ टू बी मेड अकाउंटेबल टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ टू दिस पीपल, ओके. दोज क्लेम फॉर नेसेसरीज, ओके. नाउ इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फीडिंग अ पर्सन, अभी मेरे नेक्स्ट डोर एक ग्रैनी है, ओके. नाउ शी इज़ हैंडीकैप और शी इज़ बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज हर आई साइट इज़ वीक, फिर वो कुछ उठ के ठीक से खाना नहीं बना पाती है खुद के लिए या चल फिर नहीं सकती है. तो ऑब्वियस है कि उनको खाना पीना, ओके, ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके. उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हम जाके भर के आते हैं, उनका टेलीफोन का रिचार्ज हम करवा के आते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट, ओके, वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर ओन विल. Nobody has contracted us, okay. We have not entered into a contract that I am going to take care of this lady lifelong. No, but we are doing it willingly or we are doing it for her, okay. So now whatever expenses we incurred in taking care of her or fulfilling her all her necessities, we can claim it from her. Now claim it from her means she is not entitled in person, but we can recover it from her property or from her assets, okay. So that is first type, that claim. Claim is done by whom? The person who is providing the necessities to the person who is in need of all this necessity, and that person minded, that person has to be incapable of satisfying his own necessities, ओके. तो ही अगर बंदा हाथ पैर ठीक है, बोल सकता है, चल फिर सकता है, सोच समझ सकता है, काम करके सब कमा सकता है, देन दैट पर्सन इज नॉट सेड टू बी अ लूनेटिक और अ इनकेपेबल पर्सन, ओके. सो क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन, किसको भी हम दे रहे हैं? जो इनकेपेबल है, जो इनकेपेबल है खुद का ध्यान रखने के लिए, उसके लिए जो भी खर्चा करता है जो बंदा, तीसरा बंदा, वो क्लेम कर सकता है. सेकेंड टाइप, दैट इज सेक्शन 69 सेज payment by an interested person or party, okay. Payment by an interested person. Now for example, I have a shop, okay.
और वो शॉप मैंने रेंट पे दिया हुआ है। नाउ इफ़ यू सी इन शॉप में कितने सारे टाइप के हमको चार्जेस लगते हैं, हमको वाटर बिल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, गवर्नमेंट के कोई ना कोई टैक्सेस आते रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई हैव नॉट पेड प्रॉपर्टी टैक्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको मेरा शॉप बेचा है, रेंट पे दिया है, माइंडेड आई एम नॉट सेइंग सेलिंग, ओके, आई एम सेइंग मैंने मेरा प्रॉपर्टी तुमको रेंट पे दिया है, मेरा शॉप मैंने तुमको रेंट पे दिया है और मैं तुमसे रेंट वसूल कर रही हूँ, बट देन आई एम नॉट पेइंग द गवर्नमेंट चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस आई एम नॉट पेइंग, property tax I haven't paid, okay. So what happens is government sends a notice and the government officers come to seal my shop. Now the person to whom I have given my shop on rent, ओके, व्हाट डज ही से, भाई मेरा दुकान तो अच्छा खासा चल रहा है, अगर ताला लग गया तो मैं क्या करेगा, इसमें मेरी थोड़ी गलती है अगर उसने टैक्स नहीं भरा है तो। सो फॉर टाइम बीइंग व्हाट ही डज कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं तो वो खुद पैसे भर देता है गवर्नमेंट टैक्सेस के। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ 1 लाख रुपी बिल विच इज रेज्ड एज अ प्रॉपर्टी टैक्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, सो दिस पर्सन who has taken my property on rent, he pays 1 lakh rupee with the fine, with the penalty, okay, and he saves the shop. That doesn't mean that he cannot recover that money from me. I am responsible for paying property tax because I am the owner of the property, okay. So that the person who has taken the property on rent can will take the payment from me, whatever payment he has made to the government officer, he can claim that entire amount from me. So that is what payment by an interested party. He is interested at that point of time to save his shop, ओके, टू सेव हिज कस्टमर। अगर गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने ताला लगा दिया, तो अंदर उसका खुद का सामान रह जाएगा, उसके सारे कस्टमर टूट जाएंगे, उसका डे टू डे बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। सो फॉर हिज ओन सेक ऑफ इंटरेस्ट, ओके, फॉर हिज ओन इंटरेस्ट ही मेड द पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, okay, and then he has a complete right to take the money from me. Now इसमें contract में कौन कौन involved थे? It was me who is involved because I am the owner of the property, and it is government who is involved. Why? Because I have not paid the government taxes or property taxes, okay. But this is the third party, okay, who is not involved into our contract, but because he was interested in that contract, he had come into the picture. Got it? This is what the Quasi Contract speaks about. Now next, third type is liability to pay for non-gratuitous act. Now this is covered under section 70. Yes. Now what is non-gratuitous act is, suppose हम कभी भी कोई शॉप पे जाते हैं, okay, let's say that we went to a साड़ी शॉप और ड्रेस खरीदने गए, and now because we keep our mobile phone in our hand, there are chances at times that we forget the phone in the shop. अभी मैं गई ड्रेस खरीदने, मैं मेरा फ़ोन वहाँ भूल गई। Now I left the shop, I came back after an hour that मेरा फ़ोन रह गया है क्या? वो बंदे ने बोला हाँ मैडम आपका फ़ोन यहाँ रहा। I take my phone, I check that my 2000 rupees of balance था मेरा जो, वो पूरा यूज़ हो चुका है। Now who was supposed to be responsible for my phone? It is what it is said as non-gratuitous. मैंने willingly अपना फ़ोन उसके पास नहीं रखा है, non-gratuitously, मतलब मैंने कोई ऐसे अपने हिसाब से अपनी गिफ्ट तरीके से या उसको यूज़ करने के लिए मैंने नहीं रखा है, बाय मिस्टेक मुझसे वहाँ रह गया। सो दैट पर्सन जिसके यहाँ पे मेरा फ़ोन रह गया था, he is responsible to keep it as it is, okay. But what he did, he opened my phone, he made certain calls and he used up my balance. So in such a case, he is accountable, he is responsible to pay me the amount which I claim as my balance. अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि कोई बोलेगा मेरा 5000 का बैलेंस हो सकता है, 3000 का बैलेंस। नाउ दैट इज ऑल व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट एंड ऑल, यू हैव टू प्रूव, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट। बट इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज मैंने सब्जी का थैला था, वो मैंने किसी कोई ऑटो में छोड़ दिया गलती से। अभी वो ऑटो वाला मुझे अगर वापस मिल जाता है और उसमें से मैंने देखा कि मेरे 2 किलो भिंडी थी, वो तो गायब हो गई, तो वो रिक्शा वाले को 2 किलो भिंडी के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। So that is what it is, liability to pay for non-gratuitous act. कोई willingly अपना सब अपना सामान छोड़ के नहीं आता है, कभी कभी गलती से हो जाता है, पर गलती में सामने वाले को they have to take care of our goods, okay, neither and they should not use our goods, okay. If we give it willingly, then we cannot claim, but we do not keep it willingly, then no person cannot use our products, okay. Next, that is the fourth type, is finder of the goods, that is covered under section 71. Now finder of the goods, now if you see at times you will find that some people are missing. If you find that person, we will pay you,
okay, or some reward systems is going on. So it is covered under this section 71 of Quasi Contracts, okay. Okay, now what does that say? Like for example, I lost my purse. Actually ये genuinely हुआ था. मैं जब ब्यूटी पार्लर में गई थी तो once it had been so that मैं ब्यूटी पार्लर में गई थी, obviously थोड़ा बहुत अपने looks के लिए गई थी वहाँ पे, and it so happened that I had to remove all my jewelry, okay, and I had to keep it there. In such situation, what happened was when I was removing jewelry, I kept it. I didn't realize that one of my ring fall down, okay, and somebody else took it मतलब उसने पिक किया और वो लेके चला भी गया, मुझे वो चीज़ पता ही नहीं चली. Then what happened? Then I announced, okay, at that point of time to that female that whosoever find me that ring, okay, I'll pay them 1,000 rupees, okay. So what happened is, now that the ladies who were serving in the salon, they realized that there was 2-3 female who came in and they went. Maybe उन तीन में से किसी को मिला हो, okay, because they found everywhere in the beauty parlor, but they couldn't get my ring. So what they did, they called up that ladies, okay, to inquire. Now inquire किया तो उसमें से एक बंदी ने बोला कि हाँ भाई मेरे पास रिंग आ गया है, so I'll come and just hand it over to you. So now when that lady, that beautician handed over back to me, I am supposed to pay 1,000 rupees to her. Why? Because she is the finder of my goods, okay, and I had claimed that I am going to pay her a reward. Not her, but whosoever find my goods, I am liable to pay the reward because I announced it. So that is covered over here, finder of the goods. If somebody finds my goods, I am supposed to pay the reward if I announce the reward. If I don't announce the reward, if I am silent about it, then obviously it is a gratuitous act which is done by the former person, and I am not supposed to pay any reward, okay. So okay, but meanwhile the person, now for example, if I found a calculator, see it's I'll just give you an example. I can just hand over her goods or his goods to her, to that person, okay. Now one more thing, now there is one exception, or a person who has found the goods. When can that person sell the good? Now for example, I found a bag of bananas, okay, lying in the auto. So when I got into the auto, I say अरे भैया किसी का बनाना यहाँ रह गया है, तो बोलते मैडम मैं क्या करूँ, मैं तो भूल गया हूँ किसका था, okay, so I don't know who had carried those bananas, you take it away. Now when I take it, can I preserve it until and unless I find the owner of the banana? No, because banana is a perishable item. Now when there is a perishable item, the person who is the finder of the goods, he can sell the goods, he can sell the commodities which are perishable in nature, and because otherwise you have to throw it, okay. So in case of that, then you can consume it, and if you found the owner later, you can pay to the owner for whatever consumption you have done, okay. Next and the last type is liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. Now I'll say this point, I find it, this point and this point is similar, okay, kind of similar again, but यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुई है under coercion, which is covered under section 72. This entire type is covered under section 72. Liability of a person to whom money is paid, okay, or thing delivered by mistake. मुझे किसी को 500 रुपये देने थे, गलती से एक की जगह 2 500 रुपये की नोट चली गई, ओके. एट टाइम्स होता है ना, नोट्स इतनी चिपक के रहती है, सो वी डोंट अंडरस्टैंड. सो देन द फेलो पर्सन को समझ में आया कि भाई मेरे पास 2 500 रुपये आ गए हैं, बट स्टिल ही कीप्स हिम विथ हिमसेल्फ. सो व्हाट हैपेंस, आज के ज़माने में कोई रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है कि भाई अब तुम उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि 500 रुपये के लिए केस करने जाओगे, मैं प्रूव कैसे करूँगी कि मेरे पास 2 500 रुपये के नोट थे, ओके. बट स्टिल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन जिसको पैसे चले गए हैं, ओके, इट इज़ देयर ड्यूटी टू पे इट बैक, okay. So liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. Let me tell you one more example, like A and B, okay. See, myself and my sister has jointly given 10,000 rupees to my brother, okay. Now 5,000 मैंने निकाला, 5,000 मेरी बहन ने निकाला, और हमने मेरे भाई को 10,000 रुपये दिए. Now मेरी बहन को ये पता नहीं था कि मैंने उसे पैसे ले लिए हैं वापस. नाउ मेरे ब्रदर ने 10,000 रुपये मुझे वापस दे दिए थे, ओके. मेरी बहन को ये पता नहीं था, एंड शी वेंट बैक टू आस्क फॉर द मनी. नाउ इज दैट what has happened over here?
It is my mistake. I have to inform my sister that I have got the money from the person and I have to pay to my sister her part of money. Correct? So what is over here? Now I have received, it is my liability. When I have received the money, I have to pay it to the person who is supposed to receive it from me as well. Okay, मेरे भाई ने हम दोनों का पैसा मुझे दे दिया. Now it was my duty to pay that money back to the to my sister. Or you can take it in a reverse case also. Let us understand it from the other angle. Now me and my sister have jointly given money to my brother. Again same scenario. Now my brother, okay, I pay to my sister 5,000 rupees. Okay, and I say that तू अपने पास 5,000 रख, मैं पूरा 10,000 भाई से ले लूँगी. So the entire हिसाब हो जाएगा. My brother unknowingly pays 5,000 again to my sister and 5,000 to me. So what my sister does, मैंने already मेरी बहन को pay कर दिया है 5,000. So is she entitled to take again from my brother? No. So she is supposed to either give it back to me, either give it back to my brother and tell her that you give it to the other sister. Correct? So that is the main point. That is the example of this point, trying to explain this point, that liability of a person to whom money is paid or a thing delivered by mistake. By mistake हुआ है, you have to return it back. Or under coercion. Coercion हमने सुना था. What is coercion? Coercion is nothing but undue influence. By mistake मतलब जानबूझ के. ओके या फिर मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के ही गलत किया है so that मुझे उसमें से कुछ advantage मिल सके. So when you are doing something like that, you are liable to pay either in money or in kind or in thing, whatever you have taken. Okay, so clear with the types. Section 68 to 72, this question is important. What is quasi contract and explain its type. It is very important. You can explain it in one line with an example. Okay, try to explain it with an example so that the explanation parts become very easy. Okay, so now let us go to E-contracts. What is E-contracts? Simple है. पहले ट्रेड था, फिर ई ट्रेड हो गया, कॉमर्स था, ई कॉमर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स का ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई ओवर हियर. ई इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पहले कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एग्रीमेंट्स थे, आज भी होते हैं, क्या फिजिकल फॉर्मेट में होते हैं. बट नाउ व्हेन द ओवरसीज बिजनेस हैज इंक्रीज और व्हेन पीपल टाइम कंस्ट्रेन, ओके, पीपल आर रनिंग द बिजनेस रियली ऑन अ शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन, they really don't have that much time to pass on one document from here and there again and again. So what has happened? Emails have made our life really easy. So what the today's businessmen plan to do, they send the contract or proposal or offer via email. They take the acknowledgement via email itself. Okay, so that is nothing but e-contracts. Now who are the parties? Parties again will be the same as the contract. Contracts में और e-contracts में कोई changes नहीं है, minded. Okay, वहाँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसा होता है, फिजिकल फॉर्मेट होता है. मैं फॉर्मेट भेजती हूँ भाई, मैं एज अ प्रपोजल भेजती हूँ, वो सामने वाला उसके ऊपर एक्सेप्टेंस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, वो मुझे वापस भेजेगा, फिर मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ. सेम वे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट या ई कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है. मैं सिर्फ टाइप वाला भेजती हूँ, ओके, और मेल में भेजती हूँ. आई टाइप इट, आई ड्राफ्ट अ लेटर और आई ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच आई वांट टू मेंशन इन फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, सेम टर्म्स एंड कंडीशन आई विल मेंशन इन माय कंप्यूटर. ओके, ई कॉन्ट्रैक्ट में सेम सारी चीज़ें सेम होंगी, डेट लेके, टाइम एंड प्लेस लेके, एवरीथिंग. ओके, टर्म्स एंड कंडीशन सारे कॉन्ट्रैक्ट के सेम होंगे. आई विल सेंड इट एज अ ऑफर. फर्स्ट थिंग, पहले क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, हम ऑफर भेजते हैं, हम प्रपोजल भेजते हैं. ओके, सो इट इज सेंड बाय अ प्रोमिसर और अ प्रपोजर और व्हाट वी कॉल इट एज अ ओरिजिनेटर. ओके, नाउ दिस पर्सन इज सेंडिंग ई प्रपोजल. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, पहले हमने सिर्फ ऑफर या प्रपोजल सुना था, अभी क्योंकि वो ई कॉन्ट्रैक्ट है तो वी विल से इट एज ई प्रपोजल. ई प्रपोजल फॉर्मेट में भेजता है, किसको भेजता है, सामने जो एक्सेप्ट वो है एड्रेसी, यू कॉल इट एड्रेसी, प्रपोजी, प्रोमिसी और एक्सेप्टर. द पर्सन, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था, अब बॉय प्रपोजेज अ गर्ल, तो वो क्या कर रहा है, वो ऑफर भेज रहा है अपनी तरफ से, किसको, लड़की को. ओके, सो अगेन दिस अ पर्सन हु वांट्स टू डू अ बिजनेस विद सम पार्टी, ही सेंड्स अ प्रपोजल टू द प्रोमिसर, एक्सेप्टर, प्रपोजी और एड्रेसी. एंड इन रिटर्न when this person accepts all the terms and condition, gives his free consent, it is known as E-acceptance. He gives his acknowledgement back to the proposer that yes, I am willing to do business with you, I accept all the terms and conditions, etc. etc. जो भी है उसके अंदर वो सब मैं accept करता हूँ. So that is known as E-acceptance.
Okay, so E-acceptance understood. When this person accept the E-proposal and give his acknowledgement or free consent to the proposer, then it is known as E-acceptance. Okay. Next we go online contract validity. Now online contract की validity क्या होती है? It is same as what we have learned in as per Indian Contract Act 1872. जो भी physical format के contracts की validity होती है, same goes for E-contract. Like फर्स्ट इज फ्री कंसर्न. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दबाव में, प्रेशर में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, कोरिजन में, फ्रॉड करके वैसा कोई भी कंसर्न हमको मिला होगा, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स कैंसल. दैट वाज द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज द सेम कंडीशन फॉर ई कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड इज लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? हम कोई भी ट्रेड या एक्टिविटी करते हैं, इट इज़ फॉर सर्टन कंसिडरेशन. ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं? कमाने के लिए कर रहे हैं. ओके, इट इज़ नो मोर एज अ सोशल बिजनेस और एनीथिंग. सोशली हम कुछ नहीं करना चाहते. वी डू इट फॉर, देयर हैज़ टू बी सर्टन कंसिडरेशन. ओके. थर्ड इज पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. जो भी पार्टी है, जो प्रपोजर है, प्रॉमिसी है और प्रॉमिसर है, एक्सेप्टर है, प्रपोजी है, जो भी है, दोनों पार्टीज या हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ई कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ऑल दिस पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंट? लूनेटिक नहीं होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड वाला होना चाहिए, मैड पर्सन नहीं होना चाहिए. Okay, so these are all conditions when we say that a party is competent. Under 18 का एज का नहीं होना चाहिए, so because we cannot enter into a contract with a minor. Okay, next is object of contract should be lawful. मैं कोई भी illegal items में ट्रेड नहीं करूँगी, एनिमल फ्लैश में या एनिमल स्किन में ट्रेड नहीं करूँगी, वेपन्स में ट्रेड नहीं करूँगी. सो दीज आर ऑल व्हाट? इलीगल बिजनेस व्हेन यू कंसिडर. सो व्हाट इज द मेन हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड इफ आई डील विथ इलीगल प्रोडक्ट्स. ओके, every country has a list of products that are illegal or that are banned, and still if you try to trade into that products, then your business is a big no for that business, because if you are caught, you are put directly behind the bars. Okay, and if in such situation, even if still you go ahead and do a business, okay, these contracts are said to be void contracts. You cannot go into the court of law for justice. Okay, so ये 4 पॉइंट्स हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कवर किए थे. सेम वैलिडिटी के पॉइंट्स है ई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू आई एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट. सेम, अगर मेरे पास आज फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता और मेरी एक ऑपोजिट पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया. ब्रीच मतलब क्या होता है? कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किए या मुझसे जो भी प्रोमिसेस की थी वो फॉलो नहीं किए उन्होंने. सो व्हाट आई डू? आई ड्रैग दैट पर्सन इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ. आई शो देम द कॉन्ट्रैक्ट टू द जज दैट देखो ये कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस था, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट था, ये टाइम पे मुझे डिलीवर होना था, ये बंदे ने मुझे डिलीवर नहीं किया, सो मुझे इसके अगेंस्ट केस फाइल करना है. सेम थिंग यू कैन अगेन डू इन ई कॉन्ट्रैक्ट. जस्ट बिकॉज वो ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. यू कैन स्टिल take out that contract print out. You can go into any of the civil court or high court which is there in your city, and you can still file a case against the person who has done a breach. Okay, so ऐसा नहीं होता. हम लोग को स्टार्टिंग में जब अभी now तो people are very much familiar with emails and everything. Okay, and they are highly recommending doing business or exchanging mails, exchanging contracts through email. But starting में जब आया था, जब new concept था, people were really scared. भाई ईमेल की वैलिडिटी क्या है? अगर ईमेल में मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया या मैंने ऑर्डर दे दिया, फिर उसने फुलफिल नहीं किया, मैंने पेमेंट भी कर दिया, पार्ट पेमेंट, फिर भी उसने फुलफिल नहीं किया, हाउ विल आई ड्रैग दैट पर्सन टू द कोर्ट? विल कोर्ट एक्सेप्ट माई ई कॉन्ट्रैक्ट और नो? So these were all questions which were coming up, but it is same as your physical contract. E-contract also stands valid. Only thing is that these 4 points of validity should be covered. Then you can enforce your e-contract also in any of the civil court or high court in your city. Clear? You can just take down the pointers, then we'll go to the next topic. Okay, so you can file a case in civil court or high court in your city, whichever is available. Okay, your contract, your physical contract and your e-contract stand same. Now the only thing is the format is also same. The terms and condition, like for example sale and lease agreement होता है. Okay, now everything has been done online. मुझे मेरी प्रॉपर्टी अगर लीज पे देनी है तो मैं पहले क्या करती थी? लॉयर के पास जाती थी, पूरा टाइप करवाती थी. वो टाइप नहीं करता था, उसके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होता था, वो प्रिंट दे देता था. सो देर आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट और एवरी एग्रीमेंट दैट यू वांट टू एंटर. ओके, बट इन केस इफ यू वांट एनीथिंग स्पेसिफिक, okay, then you have to mention that even in the e-contract.
ओके सो एंड दैट हैज़ टू बी अगेन एक्सेप्टेड बाय द फॉर्मर पर्सन. ऐसा नहीं है कि भाई मुझे लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू like if it I give you a order of 100 yeah, you have to supply me 100 fans. Okay, I give you an order of 100 fans, but I'll say that I want it in a part. अभी ये normal standard format हो गया, भाई मुझे 100 fans का order देना है, ये price पे ये time पे मुझे मिल जाना चाहिए. Then I add a clause that if at all it is damage in shipping, okay, I will not bear the charges. I will not bear the loss. It has to be bared by the person who is sending it. Okay, so this is usually not mentioned in any of the contract. If these are certain clauses, okay, I am not saying कि ये mention नहीं होगा. This is what I am saying, assuming that if it is not mentioned in the standard contract, okay, then I have to add it and I have to take a concern of the fellow person. अदरवाइज उसको पता नहीं होगा कि मैंने कुछ एडिट किया है, मैंने कुछ अलग से एक्स्ट्रा डाला है कॉन्ट्रैक्ट में, या कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किए हैं. देन इफ एट ऑल ही इज नॉट अवेयर, देन माय कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. सो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट से जब हम कुछ डिविएशन करते हैं, डिविएशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डालना चाहते हैं, देन वी हैव टू टेक अ फ्री कंसर्न. इट हैज़ टू बी अगेन कंसल्टेड बाय टू द ऑपोजिट पार्टी. इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म एंड ही शुड गिव हिज विलिंगनेस दैट ओके एंड एक्सेप्टेंस, देन ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन गो अहेड. Okay, otherwise standard contracts are everywhere accepted. Any changes, that is also accepted, but it has to be with the free concern. Okay, so over here we finish our e-contracts. Okay, for any queries, again you can log on to www.graduateguru.in and stay connected. We'll again go ahead with the other topics, and do hit like, share and subscribe. Thank you.